welcome. You're watching the Newshour Agenda. I'm Padmaja Joshi. In a week from now, the Delhi police will file a charge sheet against former Wrestling Federation chief and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh. But a big cloud now hangs over whether there is any hope for justice. Because so far, Brij Bhushan Sharan Singh has not been arrested. Most people are arguing, why should he be arrested? How can one believe the testimonies of the complainants at face value? Here's why. Because not only are there testimonies describing in great detail about what Singh did, but they have also been backed up independently by other people who were eyewitnesses to what Brij Bhushan did. The latest is an international referee who has backed up the complaint made by a woman wrestler about Bhushan molesting her during a photo session in 2022. Listen in. चैंपियनशिप के लिए ट्रायल हुई थी और उस ट्रायल खत्म होने के बाद एक फोटो सेशन होता है। तो उस फोटो सेशन में हमने देखा था कि एक लड़की प्रेसिडेंट और उनके बीच में खड़ी थी। वो कुछ देर बाद वहाँ से कुछ बोलती हुई बड़बड़ाती हुई वहाँ से निकली और तो हमारा ध्यान भी उधर गया। तो हमने भी देखा कि उस लड़की को जहाँ बच्ची को टच नहीं करना चाहिए वहाँ पे उन्होंने टच किया। वो जूनियर एशिया चैंपियनशिप थी वहाँ पर भी एक ऐसी घटना हुई थी। तो वहाँ पर इंडियन खाने की व्यवस्था की गई और अध्यक्ष जी और जो उनके तमाम साथी जो वहाँ पर थे वो फुल नशे में थे और बच्चियों से जो बात नहीं होनी चाहिए थी वो बातें उन्होंने वहाँ पर की। वर्ल्ड चैंपियनशिप थी कैडेट की अंडर 17 की। तो अध्यक्ष जी खुद स्पोर्ट्स ड्रेस पहन करके लड़कियों को दाव सिखा रहे थे। तो जो और दूसरे हमारे साथी को रेफरियों ने देखा तो उन्होंने कुछ ऐसा भद्दा इशारा करके ये कहा, इंडियन। So you just heard international referee Balbir Singh corroborating what a wrestler has complained about an episode from Lucknow in 2022. But he isn't the only one. This is not the first time when witnesses have corroborated what a wrestler has complained about. Before Balbir Singh, 2010 Commonwealth Games gold medalist Anita has also put a stamp of corroboration on the claim of another wrestler who complained that Bhushan called her to his room in the national camp in Patiala and forcibly hugged her. A state-level coach is the third eyewitness who has corroborated that a wrestler told him about the advances made by Brij Bhushan Sharan Singh hours after the assault took place. But even now, supporters of Singh are emboldened by another parallel development. By the minor victim's father making a U-turn on the FIR he had filed earlier. Remember, so far there were 7 complainants, 6 adult wrestlers, 6 adult women wrestlers, and 1 minor on whose behalf her father had filed the FIR. In a shock development though, the 17-year-old's father now has not only gone back on his earlier claims that his daughter was molested, but also said that he did it out of anger. This U-turn is again being quoted to question the very case against the BJP MP. आपने ब्रिज भूषण के खिलाफ क्यों गुस्सा माना अगर रेफरी की गलती थी तो? अब रेफरी किसने नियुक्त किया? फेडरेशन ने। जी। जो भी टीम बनती है वो फेडरेशन से वो करती है। जी जी। फेडरेशन हेड कौन है? ब्रिज भूषण। तो फिर किसके खिलाफ कंप्लेंट गुस्सा होगा अगर? ठीक है, तो फिर आपने फिर वापस क्यों ले लिया ये सेक्सुअल हरासमेंट वाला केस? देखो, जो चीज क्लियर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहती है। पहले चीज कोर्ट में जाके क्लियर हो, लेकिन जब बात हुई मेरी वहाँ फेडरेशन में बात हुई, बोला भाई ठीक है आप बेटी से तो हम एग्री करते हैं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है, अगर कार्रवाई कर रहे हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, उस टाइम को उन्होंने मना कर दिया था। सॉरी मैं समझा नहीं, किसने मना कर दिया था? जिस टाइम को कुश्ती खराब हुई तो जो ऑफिशियल कमेटी थी उन्होंने मना कर दिया कि कोई कार्रवाई नहीं है, आपको कुश्ती लड़ा नहीं तो लड़ा नहीं, जाओ यहाँ से। ठीक है, फिर क्या करेगा आदमी? ठीक है, तो वो उस चीज़ का गुस्सा आपके मन में था? बिल्कुल था सर, वो होना ही छोटी सी चीज़ है क्या ये? नहीं समझ सकता हूँ। बच्चे का मामला जहाँ पर वो माँ बाप थोड़ा ज़्यादा फिक्रमंद होता है क्योंकि उसकी खुद की भी मेहनत होती है। फिक्रमंद क्या करेगा ये बताओ आप? जो बच्चा 12 महीने मेहनत कर रहा है दिन रात एक करके, और ये उस रेफरी मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है। जी।
जिस बेटी का फाइनल कुश्ती वो भी मेरी बेटी है, दूसरी भी जी लेकिन उसको किसने बोल दिया कि पार्शलिटी करने के लिए, उसका क्या गया? जी 1 साल की मेहनत मेरी बेटी खराब हुई, जो खर्चा लगा है, जो वेस्ट हुआ है, जो टाइम वेस्ट हो गया, या टूर कैंसिल हो गए, वो तो मेरे हुए हैं और किसी के नहीं हुए ना। जी सारे विषय कोर्ट के संज्ञान में है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल होगी। अब चार्जशीट फाइल होने दीजिए, फिर अगर बोलना उचित होगा तो बोला जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। लेकिन जितने भी पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने आरोप लगाया कि आप लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब तो मामला ही पलट गया। अब वो कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया था कि वो इस तरह के केस दर्ज कराएं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। ये काम कोर्ट का है। तो आपको लगता है कि न्याय मिलेगा आपको, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया? आपको लगता है कि अब न्याय मिलेगा क्योंकि धीरे धीरे चीजें अपने आप सामने आ रही हैं? ये भी काम कोर्ट का है। The big question now is that as things stand today, 1 week before the charge sheet being filed, on the one hand, you've got 6 adult victims and 4 eyewitnesses, their testimonies versus the U-turn that has been done by 1 minor victim. What and whose testimony and whose version of events will prevail? Will the minor victims' U-turn really damage the case that much? The question also is, what is causing this U-turn at this point? Remember, the same father 2 weeks ago has said on record that I am afraid for my family's safety, that I am getting threats. And now he says that this was done out of spite. And if indeed this was a false complaint, does his reason of how he felt his daughter had been wronged in being announced as the losing wrestler in one bout, does that kind of reasoning really hold any water? And the end of it all, can the entire investigation continue impartially even now? Can people's faith still be in this investigation till the time that Brij Bhushan Sharan Singh continues to walk free? All right, joining us on the debate, Raman Malik, political commentator, Karan Verma, author, Rakesh Singh, General Secretary of Haryana Wrestling Association, Sanjay Hegde, Senior Advocate, Somveer Kadyan, protesting wrestler, Kapil Madan, lawyer. I want to start with you, Mr. Raman Malik. So far, a lot of political spins were given to the wrestlers who were sitting at Jantar Mantar. I have a simple question to you. Whatever their supposed motivations might be, why would the eyewitnesses be lying according to what is the version being peddled right now? So Padmaja, on the onset, let's understand something. I do not think that the government of the day would be either against the wrestlers or pro Brij Bhushan Sharan Singh, the WFI president, ex-president. I do not think so. Reason being that this government has time and again proven it bona fide that they trust and they do not compromise with the law. Having said that, I think with the kind of twists and turns that have come across, Sir, एक second. Let's just be very specific right now. I have a simple question to you. I have a simple question to you, Mr. Malik. Hold on a second. Let's not engage in generalities. Let's be very specific. I am asking you, what does Balbir Singh gain from saying, yes, I was standing there, yes, this photo was taken, and I saw this girl feeling uncomfortable standing next to Brij Bhushan Sharan Singh? I have no clue. I do not think he would gain anything or he would lose anything out of it. Exactly. In any case, he so if all of these people... See, the point is to assess... Here's what. Again, Padmaja, it is about your word against mine. No, it's not just your word against mine. Now we've had a very real consequence of Brij Bhushan Sharan Singh being still free. Is that you had but the who's going to minor assess? Father do a U-turn? Who's going to verify? Don't you think it's slightly suspicious that a man who 2 weeks ago was saying, I am scared, is today saying, I was lying?
I do not know. I was going through some reports today. There were some references of some other players also. So, having said that, I think that the only people competent to assess as per circumstantial and other evidences is the investigating authority, which is here the Delhi police. They should investigate, create a charge sheet which is submitted to the judiciary, and the judiciary with its wisdom comes up with its verdict, which would be binding on all. Let Sanjay Hegde on that this. Is how Sanjay Hegde, works. fine, you've got the eyewitnesses, you've got the complainants, and you've got the minor victim. All of this will be in the charge sheet. Why are there still demands that before the charge sheet, Brij Bhushan Sharan Singh should be arrested? In a week, we'll know. No, how do you know that we will know in a week? Who is the minister of the government of India to say that we will have a charge sheet in a week? The law is that the investigating officer cannot be supervised even by the court. That is the law from Khwaja Nazir Ahmad's case, way back in the pre-independence era. So, I don't see where the minister gets it. It is up to the investigating officer to file a charge sheet, or if there is no material, not to file a charge sheet. But each of these various incidents that are detailed out here in the media, each of them can constitute a separate offense. So even if the minor, her testimony does not add up, or there is already her testimony under 164 of the CRPC the first time where she supported the complainant. Thereafter, there is another 164 statement where she has withdrawn it. I'm going by media reports alone. It may well be that the investigating officer says, yes, the first statement was true, I have corroborated it, and I file a charge sheet. The court may also, when it is hearing the case, may, if the minor repeats her charges in court, say, yes, there is a case under POCSO made out, amend the charge, and proceed to trial even under POCSO. So it is not as if a 164 statement at variance from an earlier 164 statement closes the POCSO investigation. The investigator has to take an independent view of things, and what he faces before the court, we cannot speculate. We cannot set a timeline. Okay. Whoever is setting a timeline is doing a disservice to the investigation and to the law. But similarly, Brij Bhushan Sharan Singh supporters are saying you cannot set a timeline for his arrest. No, as far as the arrest is concerned, let's put it this way. Anybody else who's accused of POCSO almost automatically gets arrested simply because there is a need to protect the complainants, the victims. But now there is no POCSO, technically, because that case has been withdrawn, hasn't it? Sorry. Technically, there still is an investigation under POCSO. There still is an investigation under POCSO. We do not know whether it will end up in a charge sheet or not. That's a different question. Okay, there is still an investigation. There is still an investigation, Raman Malik. There is still an investigation, Karan Verma. And not only is Brij Bhushan Sharan Singh not arrested, day after tomorrow he is doing a rally. The victims, the complainants are hiding. And the accused is going to do a mega show of strength. In what country does this seem okay? Look, Padmaja, one thing that we can learn from what's happened in the past month and a half, in fact, the last 4 months, is that we have to keep calm and be a little patient for things to come out. There have been flip-flops, there have been retraction of statements. We need to be a bit patient before jumping the gun every single time. Okay. And when the minister, Anurag Thakur, has committed about 15th June, I'm sorry, let's wait till the 15th of June. Okay, I mean, we have Babita Fogart, who's a sister of one of the complainants, who's a part of the oversight committee. कीप काम, शांति रखिए, सब कुछ हो जाएगा. आप क्यों अरेस्ट की मांग कर रहे हैं? शांत बैठिए.
नहीं, शांत मत बैठिए, but और किस चीज की मांग jump the करेंगे? gun. Let's not jump to conclusions. That's Sir, what I'm jump saying. the gun. I want to just quote to you, first of all, what happened was in 2022. So it's not like anyone is saying do it tomorrow. They have, within the Wrestling Federation, also complained. Nothing came of it. They flagged it up in January. Nothing came of it. They filed an FIR in May. Nothing came of it. So it's not as if they are saying, I have filed FIR now, tomorrow hang him. Filed. So to keep calm, I agree. let's have Somveer Kadian respond to this. But now it's, जब केस हो रहा है, चार्जशीट अगले हफ्ते आ रही है, तो अभी गिरफ्तारी की मांग क्यों? Let's hear him out. सोमवीर कादियान, गिरफ्तारी की मांग क्यों है, बताइए। नहीं, गिरफ्तारी की मांग तो शुरू से ही कर रहे हैं। जो आपने देखा, अगर गिरफ्तारी शुरू में हो जाती तो क्या ये दबाव बना के जो नाबालिग लड़की थी उसके बयान बदलवा सकते थे? इसीलिए तो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं ना, कि वो केस को प्रभावित कर रहे हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं उनको किसी भी तरीके से, डरा के धमका के, पैसे का लालच देके, कुछ भी करके, इसलिए गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बार बार यही बोल रहे हैं शुरू से कि भाई आप निष्पक्ष जांच के लिए फिर उसके बाद अगर ये बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं तो उनको छोड़ देना, उसमें क्या गड़बड़ थी? लेकिन जब तक इनके ऊपर एलिगेशन है, इसको गिरफ्तार करो, फिर जांच करो, ये प्रभावित करेंगे। और उन्होंने किया, अच्छी तरह बखूबी किया। कल ही बयान बदलवा दिए, इतना दबाव डलवा दिया, मारने तक की धमकी दे दी। बताइए राकेश सिंह जी, ये सब आपके बिरादरी में, आपकी फ्रेटर्निटी में, आपके खेल में हो रहा है। यहां तक कि जो आई विटनेस और रेफरी जगबीर सिंह हैं, उन्होंने ये कहा कि कुछ तो ऐसे वाकये हुए हैं कि मुझे लगने लगा कि क्या हमें प्रेसिडेंट मिला है या राक्षस मिला है। मैडम नमस्कार, सभी को जो भी चैनल पर देख रहे हैं। मैं आपकी जानकारी में 2 मिनट लूंगा बस से। ये जो पहलवान आपके अभी पहले बोल रहे थे, इनको ये सोचना चाहिए, इनके फादर खुद हत्या के केस में अब जेल में है। नंबर 2, जिस बेटी ने आज केस वापस लिया है, उसने 2016 में किसके कहने पे एक मुकदमा दर्ज कराया और फिर उन्होंने बैकआउट किया। मत लीजिए, देखिए पर्सनल की बात नहीं, आप बोल ऐसे रहे हैं, किसी ने धमकाया नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। 2016 में उसके फादर ने FIR लॉन्च कराई, फिर उसका फैसला किया, और 7 साल के बाद आज ब्रिज भूषण के ऊपर किसी ने नहीं धमकाया। ये फालतू की बातें मत करिए, बीच में ना बोले मेरे, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। फालतू की बातें क्यों? मैं आपके बीच में नहीं बोले, आप कृपा करके शांत होइए। मैडम आप इसकी बात करिए, चुप करिए इसको। बिल्कुल, बट राकेश जी आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, क्योंकि अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के पीछे की मैं चार्जेस सुनाना शुरू कर दूंगी तो उनके ऊपर भी हत्या की कोशिश का केस है, उनके ऊपर 30 क्रिमिनल केसेस हैं सर, उनके ऊपर रॉबरी, कॉजिंग वॉलंटरी हार्म टू पब्लिक सर्वेंट एंड अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। तो किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी, उनके पिताजी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी, उनकी पास्ट हिस्ट्री, इस सब के बाहर रखिए। आज हम टेस्टिमनी और आई विटनेस की बात कर रहे हैं सर। मैं जो कह रहा हूं बोलिए। इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उस पे अच्छा आप सुनिए एक मिनट। जिस आदमी ने जो जाट कम्युनिटी के ऊपर धब्बा है, जो आदमी अपनी बेटी के कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है, उसकी सोशल डेथ वैसे ही होगी। आदमी को मरना तो वैसे ही हो जाता समाज के अंदर। 2 आदमी पे वो आरोप लगा चुका है। वो उसकी बेटी 12 साल की थी तो उसने आरोप लगाया, फिर फैसला किया। आज उसकी बेटी 19 साल की है, फिर उसने फैसला करने की बात करी। किसी ने नहीं धमकाया। ये इसके फादर को शर्म आनी चाहिए, इसके फादर को शर्म आनी चाहिए, जिसने ऐसे अपनी बेटी को आगे करके और अपने का बेटी का मिसयूज किया और हमारी बेटियों को कलंकित करने का काम किया। एक सेकंड राकेश जी, आप हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप किसी भी विक्टिम को, कंप्लेनेंट को झूठा बोल रहे हैं, उसके फादर को कह रहे हैं कि उसको शर्म आनी चाहिए, इज्जत की बात कर रहे हैं, तभी तो लड़कियां सामने आकर के कंप्लेंट नहीं करती हैं सर। पहले क्या दिए, आज आपने बयान बदलने में नहीं मैडम ऐसा नहीं है। जब वो बयान बदलती है
तो उसको सोचना चाहिए, उसके बाप को सोचना चाहिए तुम किसकी कंप्लेंट कर रहे हो। उसने कहा मेरी बेटी के साथ जाति हुई। अरे जाति का मतलब सेक्सुअल हरासमेंट। राकेश जी, अभी अगर आप इस नाबालिग पहलवान के ऊपर कह रहे हैं कि इसको इस्तेमाल करके इनके पिताजी झूठ बोल रहे हैं, आप मेरे को बताइए जो रेफरी हैं जगबीर, जो कॉमनवेल्थ की मेडलिस्ट हैं अनीता, क्या सब लोग मिले हुए हैं आपस में? चलिए जगबीर जी की बात कर लीजिए। वो कह रहे हैं 2022 में, मैं आपको कोट करता हूं, आपको कोट करती हूं क्या उन्होंने बोला है। मैंने देखा ब्रिजभूषण उनके बगल में खड़े हुए थे, उसने अपने आप को छुड़ाया, ब्रिजभूषण को धक्का दिया और फिर वहां से हट गई। वो अध्यक्ष जी के बगल में खड़ी हुई थी पर फिर वो आगे आ गई। उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। उन्होंने कहा मैं वहां था, उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ। नजर है तो जगबीर के पास 4 आंखें हैं क्या? वो जगबीर, अरे जगबीर पीछे भी देखता है क्या? आगे आगे देखता होगा। जगबीर ने ये मनगढ़ंत कहानी बना के और केवल अपनी जगह बनाने के लिए इन परिवार का एक सिस्टम रहा है। इन्होंने तो अपने गुरुजी को नहीं बख्शा, ये किसी को नहीं बख्शते हैं, ये परिवार ही ऐसा है। नंबर 2, जगबीर के 65 टूर कम से कम हैं विदेशों में जाने के। क्या जगबीर 2013 के 14 के 23 तक हर एक टूर में जगबीर गया है? क्या उसकी अकल में पत्थर पड़े थे? बेटियों के साथ जाति हो रही थी, क्या उसका बोलने का अधिकार नहीं था? आज ब्रिज भूषण का जब 2023 में जाने का समय आया, कुश्ती फेडरेशन से जाने का समय आया, आज वो इतनी बदतमीजी और उस आदमी के सोमवीर आपका जवाब देंगे। उससे पहले सिर्फ क्योंकि आपने बोला कि जगबीर आज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस परिवार को वो खुश रखना चाहते हैं। एक सेकंड सोमवीर, एक सेकंड। आप कह रहे हैं कि जगबीर आज झूठ बोल रहे हैं एक परिवार को, यानी कि फोगाट परिवार को खुश रखने के लिए। क्या फोगाट परिवार ब्रिजभूषण शरण सिंह से ज्यादा रसूखदार है कि वो ब्रिजभूषण शरण सिंह को नाराज करके उनसे पंगा लेके इस फोगाट परिवार को खुश करेंगे? दाढ़ ऐसे गलती रहे, ऐसे वो टूर मारता रहे। जगबीर वगैरह कुश्ती को एंजॉय करते हैं। इन्होंने लूट की दुकान बना रखी थी और ये इन्होंने सोचा ये तो हट जाएगा। ये बबीता फोगाट एंड कंपनी इसकी प्रेसिडेंट बन जाएगी। सोमवीर बताइए, ये लालच है। पता है फेडरेशन पे कब्जा करना कौन चाहता है? पूरा जो इनको बता दूं, ये इनके लिए तो ब्रिजभूषण बहुत अच्छे हैं क्योंकि इनको तो पद दिया है, बगैर इलेक्शन के पद दिया है, पैराशूट से इनको बनाया है एकदम से। ये इनके लिए तो अच्छा होगा ही, बाकी सभी गलत हो गए, वो ब्रिजभूषण अच्छा हो गया। अरे तुम्हारे को क्या तकलीफ है? इनको बड़े अच्छे पैरों से इनको पूछिए ना, क्या तकलीफ है? इनको पूछिए। तुम जांच कराने के लायक नहीं हो। तुमने तकलीफ है हरियाणा को जो इलेक्शन से होना चाहिए वो इलेक्शन से हो। आपको तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक बेटी को बदनाम छोड़ो, बंदूक धर के चला रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आप देखिए, अपने घर की स्थिति देखिए पहले अपने, और फिर समाज की बात करिए। एक सेकंड राकेश जी, एक सेकंड। संजय हेगड़े wants to say something, and you know, for everyone who says, "ओ तुम्हें क्या तकलीफ है? Why did all of these people keep quiet?" They have said very clearly, "We kept quiet because we were scared all of these years. Now we find strength in numbers." संजय हेगड़े आपको कुछ बोलना चाहते हैं राकेश जी? Then I will get in कपिल मदान also. Yes. नहीं, मैं ये राकेश जी को और सबको यही कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे चला रेसलिंग फेडरेशन, भूल जाइए कि कोई और मेडल इंडिया को आने वाला है, भूल जाइए कि कोई बेटी रेसलिंग पे आएगी, भूल जाइए कि कोई पिता अपनी बेटी को रेसलिंग में ले आएगा। Tell me this, Raman Malik. How is it possible? Okay, चलिए अब सब लोग चुप हैं, उनकी गलती है। कोई अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रहा है। राकेश जी कह रहे हैं कि वो बेशरम है। I have a very simple question. एक महिला है जो कि कंप्लेंट कर रही है, एक आई विटनेस है जो वर्ड फॉर वर्ड is corroborating what the complainant has said. For example, this lady, she said, and I quote, "Since I was one of the tallest wrestlers, I was supposed to stand in the last row. While I was standing in the last row and waiting for the other wrestlers to take their positions, the accused came and stood alongside me. To my shock and surprise, I felt a hand on my buttock. I immediately looked back and to my horror, the accused has placed his hands on my buttocks. I immediately tried to move away from that spot in order to protect myself from that inappropriate touching by the accused." तो फिर क्या इस कंप्लेनेंट ने रेफरी को कॉल किया और कहा मैंने एफआईआर कर दी है, पुलिस आपके पास आने वाली है, अब आप भी मेरा झूठा
बयान रिपीट कर दीजिए पुलिस को. Is that what your suggestion is? Padmaja, I will not hold anybody complicit of collaborating with each other and coming up with the fact, because if we look into, I will not give this analogy कि जी वो the copy of FIR was in the public domain, his statement came after this. I am not going to do all of that. The only thing which I am about to say is two things. One, suddenly this whole thing, dragging the Prime Minister into it, is a nuisanceable kind of argument and a narrative given that I told everything in so and so time to the. How much time was she there standing? Whether she was able to tell all of that? Did she meet after that particular Raman Malik, event first again? Of all, let's not miss the wood for the trees. The fact that there might be political elements involved does not take away from the case itself. The politics is a sideshow. The main case remains that here is a wrestling federation chief who is a sitting BJP MP who is accused of very serious misdemeanor. Focus on the case. You simply cannot dismiss the charges saying, oh, इनके साथ आके पप्पू यादव बैठ गए, hence proven कि ये सब झूठ बोल रहे हैं. Pappu Yadav ke merits we can discuss separately, but the charges must be discussed on their own merits. को राहुल गांधी को, पप्पू यादव को, अरविंद केजरीवाल को, ममता बनर्जी को, सबको छोड़ दीजिए. हाँ, छोड़ दीजिए. आपसे एक चीज पूछता हूं कि इस देश के अंदर एक चीज तो है ना कि हमारा संविधान और कानून है जो ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव के और जुडिशरी के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन होगी. ये हमारा संविधान कहता है. तो कानून के हिसाब से नहीं चला ना. पॉलिटिकल एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए. आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन को अरे कौन से अकॉर्डिंग टू संविधान और कानून बनानी थी, नहीं दिया उसी तरीके से नहीं बनी ना. This is a manufactured comment. Do not give that comment. It does not suit somebody like you. You're very, very senior a person and people respect you a lot. My humble submission here is, let's understand two things which are basic premise of this. One, that the allegations are deemed to be true till the time the investigation agency also collaborates with it in terms to the investigation. And so let me ask you a simple question. If you are an ordinary citizen, and you filed a case, if you were not a politician, you filed a case against a sitting member of parliament, and you are sitting in your house, you switch on your TV and you see that politician is sitting there addressing a crowd of 5,000 people, how confident would you feel going into court hearings? I'm just asking you that. That man tomorrow, day after tomorrow, will stand there in his constituency, in front of his people, address a crowd of people, and you will be sitting alone in your house, being called a liar and a shameless person by all, or by at least a handful of people. How confident would you feel? At least let me answer. I would feel as confident, inconfident, or as issued on the circumstantial happenings based on what I had said earlier, what I am saying right now. If I would have gone ahead and stated, oh, that person is a god, and suddenly I come say, no, he is a devil. Okay. Suddenly, how... Well, then you must be a very confident person, because frankly it would scare the living daylights out of most people if you were to be surrounded by a mob of supporters of a politician that you are challenging. Anyhow, Kapil Madan will respond to you. Padmaja. Yes, so Padmaja, I will make a very quick point. I will come back to you, sir. Let him also come in. Yes. I will make a very quick comments here. Now, in a matter like this, in an investigation like this, it is very, very important that you arrest an individual, and why an arrest is incumbent is because you need to ensure that the witness are not threatened. There is a proper investigation. There should not be any chance where accused can influence the investigation. Now, what we are witnessing today is that there is a different statement made by the father. I'll give you a wonderful example. Sir, Padmaja, do you remember the Rohtak double rape case? Is it the way to debate? Sir, I would just
Sir, Do you remember the Rohtak double rape case? I was on your channel. I was on your channel. Rohtak double rape case. So it came out that you said your channel said is this the that way? these animals You gave him, I think, 4 or 5 minutes. Hold on a second. Let him finish his point. I will come to you, Mr. Raman Malik. I'll come to you. Yes. Now the point, Padmaja, is that the fact that there is a different statement made by the father, it appears that, there could be a possibility that the witness or his family was being intimidated. And that's the reason why you had these kind of statements coming at the fag end of, and after a lapse of about 1.5 months from when the FIR was registered. This is basically, the arrest is to ensure that you don't have this kind of a situation. Today you are hanging on to the U-turn by the minor. Kapil Madan is saying it's coercion. I want to make a very important further point, Padmaja. The fact remains, if they want to rely on the statement made by the father, because the statement does not have any legal consequence, because the minors 164 would have been recorded by now, and that would have been with the police. The fact remains, if someone wants to contradict and wants to give a different statement, you can't proceed or rely on what the father is saying. The fact is, if the girl's statement under 164 is recorded by the magistrate, there is a presumption to whatever she has said is true. And if that statement is incorrect, as it has been suggested by, Raman Malik, that the father is giving a different statement, for that you have to approach the High Court. It's the same father. It's the same case. 2 weeks ago when the man said, I'm living in fear of my life, the same people today who are calling his word gospel called him a liar. Now the shoe is on the other foot. Very often, there are people who think that their support of an issue should be based entirely on their politics. Sometimes you need to look beyond and only evaluate an issue based on your own morality and ethics. Perhaps this is one of those watershed cases. I will leave you to think about it. Thanks very much, all gentlemen, for joining me. The News Hour first. We'll be right back after